Hello, good morning student. Today we will discuss about the integration of method of substitution, the remaining part of the second exercise. You look at here, we have already discussed question number 1 from the exercise. What exercise here given 9b. So, the question number 2, 5th, 6th, 7th bit and question number 3, 1, 2, 3 bit. We will discuss first, then I will write the next part. Now look at this part. Here it is cos x dx sin to the power 5x. ये कार सबले आमे देखिया पड़िबो सब्स्टिट्यूशन का कराबो डिनोमिनेटर जोटा अछि ताको सब्स्टिट्यूशन कराबो न्यूमरेटर sin x र डेरिवेटिव टा cos x dx सो sin x को t निया sin 5th x को आमे t नबारे only you take what sin x equal to t then कौन आसीबो cos x dx equal to dt जो ऊपर टा dt सो केते आसीबो इटा t to the power 5 काई sin x टा t नियाला t to the power 5 and cos x ds equal to dt सो ऊपर टा dt तळे रहला t to the power 5 सो t to the power 5 टा को इटी कोन कराला t to the power 5 टा को ऊपर नियाला t to the power -5 कराला सो इटी कोन कराबो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करे पे फार्मूला नंबर 1 अप्लाई कराबो इटी n plus 1 by n plus 1 n टा केते अछि -5 plus 1 by -5 plus 1 plus c so it is -5 plus 1 equal to what this -5 plus 1 equal to this -4 by -4 this one -4 so now get here instead of t you put what sin x then you take what sin x to the power 4 by -4 plus c. ये second part also here also you will get so कार डेरिवेटिव के दिया है प्ले डेरिवेटिव you will get ये ln x डेरिवेटिव 1 by x दिया है so cosec x रो डेरिवेटिव दिया है नहीं इट दिया है ln x रो डेरिवेटिव 1 by x दिया है so you take ln x equal to t here you should not take cosec x equal to cosec ln x equal to t नहीं but here ln x रो डेरिवेटिव 1 by x अछि तेणु करी आमे ln x को t नि आला तार डेरिवेटिव टा होची ln x रो 1 by x dx तमे x रो बाहर करा होची t रो dt आसीला सो यू पुट दिस ln x बदल रे इटी कोन पुट कराबो t पुट कराबो केते आछो cos x स्क्वायर t dx बाखरे कोन हबो 1 by x dx इटी आछो 1 by x dx you look at 1 by x dx so you take dt so इटी केते आसीला cos x स्क्वायर t dt cos x स्क्वायर रो इंटीग्रेशन होची -cot t आउट प्लस c so minus cot t पाखरे केते वैल्यू प्ले इटी ln x you put so up to this mark over now next one you get here the question number 7 bit 1 minus sin x root over cos x this one so 1 minus sin x रो डेरिवेटिव cos x इठी अछि so you take 1 minus cos x equal to t you put आर डेरिवेटिव 1 0 sin x रो cos x but minus अछि minus sin x cos x t रो dt so ये minus टा सेपटू नै लगो ना cos x dx equal to minus dt so here it is look at minus cos x dx equal to minus dt you put minus टा आगु बाहर कर दवा एटी केते रहला dt रहला आउट रूट ओवर एटा केते एति t root over t means t to the power 1 by 2 so according to integration formula power जति अछि +1 हबो 1 by 2 plus 1 3 by 2 by 3 by 2 power जति केति plus c so here it is a minus 2 by 3 3 by 2 टा reciprocal is already जीवो then we get what 1 minus sin x to the power 3 by 2 so why it is 1 minus sin x to the power 3 by 2 because you will get here t equal to we have taken 1 minus sin x okay so the question number 2 over now question number 3 you look at what is given question number 3 first bit given x root over x square plus 3 dx whose derivative is what given here x square plus 3 टाको हमें t नवा कम by x square plus 3 टाको जदि हमें t नवा आर डेरिवेटिव केते आछो x square 2x dx 3 रो 0 हिजो t रो dt हले 2x dx equal to dt हले 2 टा सेपरेट नेले dt by 2 इटी अछि x dx बदल रे लिखा है x dx equal to dt by 2 so इटी dt by 2 आसिला रूट ओवर एति इक्वल टू केते t you take t
So this is the root t dt by 2. A 1 by 2 टा आगु बाहर कर दो रहला केते root t. Root t means what? T to the power 1 by 2. You take t to the power 1 by 2. Okay. So t to the power a half is there. T to the power 1 by 2 plus 1. 1 by 2 plus 1 equal to 3 by 2 by 3 by 2. It is jati it 2 to cancel is 2 to cancel है केते रहला 1 by 3. Out t to the power 3 by 2. T means what? T equal to x plus 3 by 3 to the power 3 by 2. Okay. So this one over. Next one look at here also the same one. Here you take what 2 minus 3x equal to t. You take 3 minus 2x equal to 3 means our derivative केते प्ले 2 टा 0 आसीबो minus 3x रो minus 3 dx आउ एटी t रो dt आसीला but dx equal to what dt by minus 3 एटी हमें पुट कर दबा 7 टा को आगु बाहर करा गेला dx पाखरे dt by minus 3 माने 1 by minus 3 टा आगु बाहर करा गेला 7 by 3 आउ dt रहला एटा कोन नि आइछ हमरो t नि आइछ you put what t. Here we look at dt by t equal to formula dx by x equal to what? Dx by x equal to log x. Unlike this one, here 3 by 2 ln t plus c. So minus 7 by 3 ln 2 minus 3x plus c. Okay, this one. Question number second bit. Here you look at here the third bit is there. So x square minus a square. x square derivative x अछि तेणु करी x square minus a square to t निया so x square minus a square equal to t you put आर derivative x square 2x dx t रो dt आउ a square टा 0 a square derivative 0 constant this one so x dx equal to 2 टा सेपरेट गले dt by 2 इटे x dx अछि instead of x dx you put what dt by 2 1 by 2 टा आगु बाहर करा एटा कोन नि आइछि रूट नि आइछि रूट t टा तळे अछि ऊपर ने गेले कोन -1 by 2 पावर हे जो हेले -1 by 2 plus 1 by -1 by 2 plus 1 -1 by 2 plus 1 हेलो केते आसीबो -1 by 2 plus 1 equal to plus 1 by 2 ऊपर पावर जति की तळे जति की एटा कैंसिल हे गेला 1 by 2 1 by 2 देन कोन आसीला t to the power 1 by 2 t to the power 1 by 2 means root t this is root t equal to what here you put what x square minus a square plus c okay. Then you look at here look at the next questions where it is important question this is also very important questions to you so here the fourth bit x square plus 1 dx by x cube plus 3x plus 7 to the power 3 ये कार डेरिवेटिव किए दिया है जिबले x square x cube plus 3x plus 7 रे डेरिवेटिव होची x square x cube रे डेरिवेटिव होची x square तन करी ये पूरा ये जो ब्रैकेट भीतर जति की होची यू टेक दिस इज t जो ये जो ब्रैकेट भीतर अछि अप टू दिस मार्क नॉट होल क्यूब दिस वन यू टेक t देन इट्स डेरिवेटिव x cube डेरिवेटिव 3x square 3x रो डेरिवेटिव 3x रो डेरिवेटिव 1 सो 3 आसिला 7 रो डेरिवेटिव 0 सो ये दीटा रो कोन बाहर पड़ो 3 बाहर पड़ला रहले x square plus 1 dx x रो जेहेतु बाहर कराउची यू राइट व्हाट dx ए 3 टा को सपोर्ट नि आइजो रहले x square plus 1 dx equal to dt by 3 here you look at x square plus 1 dx equal to dt by 3 so इटी कोन आसला इटी रहला dt by 3 you put here dt by 3 लिखा है जी so 1 by 3 dt by 3 dt by 3 so instead of this one you put what dt by 3 टा आगु नि आइजो so इटी -3 अछि +3 अछि ऊपर पळाले कोन आसीबो पावर आसीबो -3 आसीबो t to the power -3 तापर इंटीग्रेशन फार्मूला में यूज करबा इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करले केते आसीबो -3 + 1 -2 -3 + 1 -2 आ एटा 3 मल्टीप्लाई करले -6 so it -6 इटी केते रहला t रो पावर -2 -2 टा तळ गुळे लाउ तो प्लस हे जो so it is 1 by -6 to the power t पाखरे वैल्यू इटी पुट कराइ जो then this is okay so now next one and this part एडरो यार डेरिवेटिव टा साइड रे अछि आ साइड रे अछि बोले यार डेरिवेटिव केते अछि इटी हमें t नै जिबा
x fourth minus 3x square plus 1 equal to t, then our derivative केते आसीबो 4x cube 4x cube एटा आगु गले केते 6x 1 टा 0 हेला dx equal to t रो dt आइरो 2 कॉमन बाहर पड़े 2x cube minus 3x dx equal to dt हमर एतिक अछि एठी 2x cube minus 3x dx एठी मध्ये सेतिक अछि ओके सो इंस्टेड ऑफ दिस यू 2 टा अछि 2 टा को एपटे आनि देले बाय 2 हबो सो एतिक बदले हम कोन पुट करिया प्ले एतिक बदले हम dt by 2 पुट करिया सो दिस इज dt by 2 ओके dt by 2 सो एटे कोन आइसला dt by 2 ए 2 टा 1 by 2 टा आगो पळेला ए t टू द पावर केते रहला 4 रहला t टू द पावर 4 इंटीग्रेशन होची t टू द पावर 5 by 5 like 2 into 5 equal to 10 t to the power 5 t पाखरे इट वैल्यू पुट कराइबो केते x fourth minus this one it put कर देले इट केते रहला x fourth minus 3x square plus 1 to the power 5 c okay this one so next you will get question of 4 you will get e to the power 3x केवल ये 3x को हमें सब्स्टिट्यूट करबा कारण e to the power x रो फार्मूला अछि सो 3x को हमें जदि हम पुट करिया 3x t 3x रो dx t रो dt ले 3 dx dt ले dx केते आइसो dt by 3 एटी हम पुट कर दो dx dt by 3 1 by 3 डागु पळेला आ e to the power एटा t आसला कारण 3x t ने आला e to the power t dt आगे रहला 1 by 3 1 by 3 1 by 3 e to the power x रो इंटीग्रेशन के e to the power x रो e to the power x then you take what e to the power x को e to the power t रो e to the power t plus cs और लगे थे e to the power t पाखरे इट पुट कर दो हमें 3x और लगे दिस वन एटा जेमति करला एटा मध्ये सेमति ए पावर को हमें कोन करिया पुट कर दो एटा t पुट कर दो सो 2x plus 7 equal to t एला डेरिवेटिव केते 2 dx रो x 7 रो 0 t रो dt सो इट अछि dx अछि dx equal to dt by 2 एटा हमें कोन पुट कर दो dt by 2 एटा e to the power t 1 by 2 डागु पळेला e to the power t रो इंटीग्रेशन e to the power t plus c એટલે e to the power t पाखरे आउतरे इट पुट कर दो सो दिस पार्ट तापर पार्ट मध्ये सेमति बट टिके आट टिके डिफरेंस अछि एटी x क्यूब रो डेरिवेटिव x स्क्वायर अछि देन यू टेक व्हाट x क्यूब को t नि आइजो आर डेरिवेटिव x स्क्वायर dx x क्यूब रो डेरिवेटिव केते 3x स्क्वायर dx dt बट हमर दिया है केते प्ले एटी x स्क्वायर dx dt by 3 એટલે टी x स्क्वायर dx पाखरे dt by 3 पुट कराला e to the power t e to the power t रो इंटीग्रेशन e to the power t एटा केते 1 by 3 एटा गला 1 by 3 e to the power t पाखरे केते हम नै जे x cube so you put this one x cube एटा बदे सेंती एटा 2 टा कांस्टेंट आगु पळेला x स्क्वायर रो एटा हम t नि आइजी x स्क्वायर डेरिवेटिव केते 2x dx x dx dt by 2 हले इट कोन कराला a to the power एटा t एटा dt by 2 आइसला 1 by 2 टा एपटे पळेला x dx 1 by 2 सो इट कोन रहला प्ले ले a to the power x रो इंटीग्रेशन हो जे a to the power x by ln a to the power t रो केते a to the power t by ln a t पाखरे हम वैल्यू कोन पुट कर दा t पाखरे x स्क्वायर a to the power x square by ln a so up to this much so question so here the bit number 7th 8th 9th so you look at what is given in the bit number in the bit number this one here you take what 2 10x equal to t 2 10x equal to t ले प्ले आर 10x रे डेरिवेटिव डाइट अछि sec square x dx equal to dt sec square x dx equal to dt so it केते आसला e to the power it 2 अछि you to take 2 here sec square x dx equal to dt by 2 ए 2 टा एपटे गले सो एति के बदले कोन आइसो dt by 2 you take dt by 2 एटी केते आसला e to the power एति इक्वल टू कोन लिया जे t नि आइ जे सो e to the t रो इंटीग्रेशन e to the t by 2 अछि by 2 plus c that is e to the power t पाखर केते 2 10x plus c by 2 is there so this is answer so here also e to the power x minus 2 को t नेले आर डेरिवेटिव टा ऊपर अछि so it needs e to the power x minus 2 equal to t तापर कोन आइसो आर डेरिवेटिव केते सिंपल e to the power x e to the power x और 2 रो 0 dx equal to ऊपर रहला dt so एति की इक्वल टू केते आसला एति इक्वल टू dt
So you take this is dt by e to the power x minus 2 equal to कितनी है जी t नहीं है जी t square टा ऊपर पड़ेगा कितने t to the power minus 2 dt इंटीग्रेशन t to the minus 2 रखे थे इंटीग्रेशन t to the minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 plus c that is t वगैरह कितने पुट करिए t पुट करिए t to the e to the power x minus 2 it minus 2 plus 1 minus 1 by minus 1 plus c. So this one is your answer or आपको तोड़ को आने के लिए plus is your you leave it to otherwise. So the last one you look at in this case here cos square x तक को हमें t नहीं जुआ cos square x equal to जब t नवा अरे डेरिवेटिव के जैसे बोले cos square x रे डेरिवेटिव हो जे आगे 2 डायक हुआ इसलिए 2 cos x into cos x रे डेरिवेटिव हो जे minus sin x x रे बाहर करा हो जे dx equal to dt that means 2 sin x into cos x equal to sin 2x but minus हो जे 2 sin 2x sorry 2 sin x into cos x equal to sin 2x so minus होची minus 2 sin x dx equal to dt so एटी केता होची sin 2x dx एटी sin minus sin 2x dx equal to dt हेले एटा कोन minus dt so एटी आमे पुट कर दो एटी कोन minus आगु बाहर कर दो एटी equal to dt sin 2x dx equal to dt written here so it is e to the power t e to the power t e to the power t रा इंटीग्रेशन कहते हैं e to the power t plus c e to the power t plus c but minus is there you put minus e to the power t पाकर कहते पुट करा है cos square x plus c so this is surround it here this part ये कार इनवर्स के प्लेट है जी sin इनवर्स रो डेरिवेटिव होची 1 by root over 1 minus x square so एडो हम कोन करिया sin इनवर्स x को हमें t नहीं जिवा sin इनवर्स x रो डेरिवेटिव दा केते होची 1 by root over 1 minus x square एडी dx कोन पे अछि x रो बाहर करा होची इक्वल टू dt एटी अछि देखलो प्ले dx by root over 1 minus x square dx by root over 1 minus x square equal to dt so एटा हम कोन लिखिया sin inverse x को t नवा एटा नै जो t dt t रो पावर केते अछि 1 अछि माने t रो पावर 1 plus 1 2 by 2 plus c t बखरा में पुट कर दवा केते sin inverse x रो स्क्वायर by 2 plus c okay sin inverse x रो power this one by 2 एटी कोन प्ले अछि डायरेक्ट फार्मूला अछि 1 minus x square थले फार्मूला हेई थांदा but instead of what x square here it is x minus 1 whole square is given so x minus 1 तो हमें कोन नै जो t नै जो x minus 1 equal to जतले t नै जो अरे डेरिवेटिव केते x रो dx 1 रो 0 t रो dt अर्थ dx पाखरे dt पुट कर दो ऊपर तळरे लागते तळरे ला 1 minus root over 1 minus रो t नि है जे t square डायरेक्टली फार्मूला dx by root over 1 minus x square equal to sin inverse x so this is what sin inverse t you put what sin inverse t plus c so this is sin inverse t पाखरे केते x minus 1 plus c this is answer so another problem we look at what is given another problem a derivative ln x ର derivative 1 by x ଅଛି एटी ln x ର derivative ln x टा जदी t नै जो आर derivative 1 by x अछि तेनु करी एटी हम कोन करिया ln x equal to t नै जो ln x equal to t नेले आर derivative टा केते 1 by x dx equal to केते असला dt एटेला 1 by x means dx by x equal to dt बळेला this is what dt divided by 1 plus
एटा t निया t स्क्वायर 1 प्लस ln x को t निया t स्क्वायर dx by x टा dt हेगला सो दिस इज व्हाट एटा फार्मूला प्ले dx by 1 plus x square equal to tan inverse x एटी म कोन आसीबो tan inverse t plus c tan inverse t पाखरे हम पुट कर दवा ln x plus c so this over next class we will discuss more about the integration okay